वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं ओबी पे हमारी नई एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एक नई वीडियो। तो आई होप बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज हमने इसमें लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक ये पीपीटी है। और इसमें हमने बहुत ही बेसिक बताया है, स्टार्ट करा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्राइमरी रेफर्स टू, किसे रेफर्स करता है? How activities are coordinated and control, how resources are allocated, the location of department and office space, the policies statement development by the firm. तो आंसर इज हाउ एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल, कैसे हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये प्राइमरी रेफर्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज टू, क्या होता है जॉब एनरिचमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज जॉब एफिशिएंसी। जॉब एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पर्पस होता है ये। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट कंसिस्ट ऑफ, किसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है? कॉर्पोरेटिव स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इनपुट एंड आउटपुट्स, एनवायरमेंट एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। कम्युनिकेशन बिगिंस विद, कहां से स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन बिगिंस विद? तो इसमें है आइडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। पॉलिसीज आर समटाइम्स डिफाइंड एज एन, कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज, क्या है ये? सभी जानते हैं, इसका सी इज द करेक्ट आंसर। साइंस एज वेल एज एन आर्ट। The field of organization behavior is primarily concerned with the behavior of individual group, how resources are effectively managed, control process and interaction between organization. So both A and C, of behavior of individual and groups, and control process and interaction between organization external constraint. The study of organization behavior has concerned basic assumptions. They are, इसका करेक्ट आंसर है all of these. An industrial enterprises is an organization of people. The people must be motivated to work effectively. The goals of the employee and employer may not necessarily coincide. OB focus on at three labels. कौन कौन से labels होते हैं? तो इसका correct answer है D, individual, groups and organization. Scope of OB does not include, क्या include नहीं होता? लीडरशिप, परसेप्शन, जॉब डिजाइन, टेक्नोलॉजी। तो आंसर इज द टेक्नोलॉजी। डी इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन बिगिन विद, ये फिर से रिपीट हो गया है और इसका सही आया आइडिया ऑर्गेनाइजेशन। A study of culture and practices in different societies is called, क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। फोर्सेस अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर, कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, पीपल, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर, क्या चैलेंजेस है? एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, वर्क फॉर डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मीसो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज रिलेटेड विद, किससे है? तो इसका सही आंसर है ग्रुप बिहेवियर से। पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, इज रिकॉग्नाइज एज ए फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, किसे कहा जाता है? तो एल्टन मायो को। इज द डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। The field of organization behavior examines such questions as the nature of leadership, effective team development and, किसे कहा जाता है? तो इसमें इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, मोटिवेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ए इज द करेक्ट आंसर। Organization behavior is a field of study backed by a body associated with growing concern with for people at the workplace. The theory, research, application, all of these. Which of the following is not correct for the organization behavior? तो
इसमें देखना है इनकरेक्ट कौन सा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए गोल ओरिएंटेड नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइज, ये नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज ए डिसिप्लिनरी अप्रोच, इसमें सारी चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प इन एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, और इज ए गोल ओरिएंटेड भी होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी होता है। देखिएगा, द स्पेस इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, थ्रू स्पेस लाइक थिंकिंग एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन डू एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट नीडेड टू मैनेज और प्रिडिक्ट बिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच और कॉग्निटिव अप्रोच। तो द बिहेवियरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट, तो इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है, ह्यूमन बिहेवियर की। सी इज द करेक्ट आंसर। OB help to understand behavior of human in workplace only. B is the correct answer. OB does not contribute to improve motivation, efficiency, interpersonal relationship. बिल्कुल सही आंसर सी। Due to the emphasis on productivity and efficiency, employees are not allowed to work with harmony with one another is limitation of organizational behavior. Which of the following is not contributing discipline of OB? कौन सी नहीं, साइ ये फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीडरशिप थ्योरीज? कौन कौन सी हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज, तीनों थ्योरीज आपकी लीडरशिप थ्योरीज हैं। इज ए स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, कौन करता है ग्रुप बिहेवियर, तो इसका सही आंसर है सोशोलॉजी। माइट इज राइट इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो था, यह ऑटोक्रेटिक मॉडल। बिहेवियर फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन किस पे है, ऑब्जर्वेबल एंड बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे। द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज टू, क्या होता है, इसके सही आंसर है इंक्रीज जॉब एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेनेंस फैक्टर, तो कौन सा है, रिकॉग्निशन। डी इज द करेक्ट आंसर। द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड, किस पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड पे। Maslow says that human beings are full of needs and wants, and these needs will lead to their job, behavior, attitude, or motivation. Behavior. The person will try for the complex level need when his basic need is satisfied. Is the correct answer. A satisfied employee will be high performer. C is the correct answer. Are social invention for accomplish goal through group efforts, organization. B is the correct answer. Who proposed the bureaucratical structure is suitable for all organization? किसने करा था, तो इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। टुडे ऑर्गेनाइजेशन आर कैसे होते हैं, ओपन क्लोज्ड, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ओपन सिस्टम्स। Which organization theory can be understood by if and then relationship, तो इसे कहा जाता है contingency approach. The term psychology is derived from the word psycho, which means soul or spirit. किसका वर्ड है ये, ग्रीक। ओके। Organization behavior is not an systematic approach. Cognitive theory of learning was given by, किसने दी थी, Pavlov या Tolman. Refers to the negotiation of agreement between two groups contracting. Is the correct answer. Which of the following is not one of the four primary management functions, planning, controlling, staffing? तो इसका सही आंसर है staffing. Most valuable assets of organization is क्या होती है, cash and bank balance. What term is used to describe voluntary and involuntary permanent withdrawal from an organization? तो आंसर है downsizing, C.
Basics of autocratic model of OB is called power. पर्सन जॉब फिट मीन्स, इसका सही आंसर क्या होगा? पर्सन कंट्रीब्यूट मैच विद द इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी. When a group gives some of its leadership position to the member of other group, it is called co-opting. B is the correct answer. The concept of work week is related with alternative work schedules. The C is the correct answer. थैंक यू. होप सो आपको इंटरेस्ट आया होगा इन क्वेश्चंस में. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं. तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो इसके हमने सेलेक्ट करें. और भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू. और सभी सब्सक्राइब कर दें चैनल को. थैंक यू टू ऑल.